अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम आपके लिए कुछ नया कंटेंट लेके आए हैं। आई एम प्रोफेसर सुरभि एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन वर्ड prepositions, not prepositions again, but a practice of those prepositions which we've already covered. And this is your quiz 1. So without wasting much of our time, before we do anything else, we should just begin with this video. So the very first one is this the train dash Cambridge? There are three options with us: over, for, and astride. I'll give you 5 seconds to think of the answer. You can think of and then we'll discuss the answer. Take your time. Okay, is this the train dash Cambridge? So we are going to discuss the options one by one. Over Cambridge मतलब Cambridge के ऊपर. No, this is not the correct one. For Cambridge हम सोच सकते हैं. Astride Cambridge, again this is not the correct option. So the correct option for this is for Cambridge. Here we will fill for. The next one is there water dash the moon? Options are on, with, up. Take your time, then we'll discuss. Okay, is there water dash the moon? On moon हो सकता है, with moon नहीं हो सकता, up the moon ये भी नहीं हो सकता. So the correct answer is on the moon. Option A is your correct answer. Next, it fell dash the table and broke. Options are OF, OFF, LIKE, like. So what is going to be the correct one? You can think of. Okay, so the question is it fell dash the table and broke. The options given with us are OF. OF नहीं होता. OFF. OFF मतलब कोई चीज किसी जगह से बिछड़ जाती है या अलग हो जाती है. तो off is the correct answer. Like again is not the correct one. So the option B will go with it. OFF. The next one. It is raining dash the whole country. So first option is throughout, second one is till, and this third one is via. You can take your time, think of the answer, then we'll discuss. Okay, it is raining dash the whole country. So throughout the whole country is your correct answer. Till the whole country nahi hota. Via the whole country again is not the correct one. So throughout is going to be the correct option. We'll go with option A. The next one, it took dash an hour to do my homework. The options are except, on, over. Okay, it took dash an hour to do my homework. Except an hour? No. On an hour? No. Over an hour. So the correct answer is over. Option number C. Over an hour का मतलब क्या हो गया? 1 घंटे से ज्यादा का समय लग रहा है मुझे अपना होमवर्क करने के लिए. The next one, it was dark dash the tunnel. So the options are then, inside, on. Think of it. Okay, it was dark dash the tunnel. Than the tunnel? No. Inside the tunnel? Yes. On the tunnel. Tunnel के ऊपर? Again, not the correct one. So the option B is inside. We'll go with inside. Inside the tunnel. Here we have next question. It's 20 December. We are very dash Christmas Day. Past Christmas, near या about? सोच लीजिए, समय ले लीजिए. Okay, it's 20 December. We are very dash Christmas Day. We are very near Christmas Day. अब near क्यों आया? Because it is already 20 December. 20 दिसंबर है और क्रिसमस डे होता है 25 दिसंबर. तो उसके हम आस पास ही हैं. तो we will go with option B, near. Past Christmas Day?
करेक्ट ऑप्शन नहीं है, अबाउट क्रिसमस डे भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, सो नियर इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8, इट्स नॉट डैश माई पावर टू हेल्प यू विद इन एक्सेप्ट विद। ओके, इट्स नॉट डैश माई पावर टू हेल्प यू, विद इन माई पावर हो सकता है, एक्सेप्ट माई पावर नहीं हो सकता, विद माई पावर भी नहीं हो सकता, विद इन माई पावर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यह मेरी क्षमता में नहीं है कि मैं आपकी मदद कर सकूं, सो वी विल गो विद ऑप्शन ए, विद इन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक एंड जिल रैन डैश द हिल। Take your time, think of the answer, then we'll discuss. Okay, Jack and Jill ran dash the hill. Like the hill? No. With the hill. हिल के साथ साथ जाना ये भी नहीं, अप द हिल। दिस इज द राइट आंसर। वैसे भी आपने सोचा होगा ये तो एक छोटे क्लासेस वाली पोम है, एंड इस पोम में हम पहले से ही लर्न करके रखते हैं, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। तो जैक और जिल रैन अप द हिल, पहाड़ी के ऊपर पहुंचे वहां से पानी भरने के लिए। सो दिस इज अ पोम, यू कैन रिमेंबर इट दैट वे ऑल्सो, प्लस द आंसर इज अप। The next one, Mr. Brown has worked in a bank dash 2001. Options are alongside, beside, since. सोच लीजिए आंसर, टाइम ले लीजिए, then we will discuss it. Okay, time to discuss. Mr. Brown has worked in a bank dash 2001. Alongside नहीं हो सकता, alongside का मतलब साथ साथ, beside भी नहीं हो सकता, since is the correct answer. अब आप सोच सकते हैं since correct answer क्यों है? since का मतलब होता है कोई चीज उस पर्टिकुलर समय से हो रही है, when we are very sure of the time given to us, then we make use of since. अब यहाँ पे हमें टाइम गिवन है 2001, ईयर 2001, तो since का मतलब उस समय से लेकर अभी तक, till date he is working in a bank. So we will go with the correct answer, and that is option C, since. Thank you my dear friends and my students. I hope you have really liked this video, and you can also test your capability कि आपको समझ में आए हैं या नहीं आए हैं using this quiz. Stay tuned for more such videos, and thank you and subscribe to this channel.